So tapasyas means what? The austerities, okay? So, so see, those who are karma yogis, karm kandis, they perform the yagyas, and those who are jnana yogis, they perform different tapasyas, meditation, and giving up the sense objects, and all these are the tapasyas, for performing the celibacy. So, Bhoktaram is what? The enjoyer. So, Krishna is the enjoyer of all the sacrifices and all the austerities done by the jnanis, and he's Sarva Loka Maheshwaram, right? Loka means the different planets. So, he's the possessor of all those planets. He's the Ishwaram. He's the controller of all the different planets. Okay. And third thing is he's Suhridam Sarva Bhutanam. Suhridam means what? Well-wisher. Suhridam, right? Who is a well-wisher of everyone. So he's a well-wisher of everyone. Sarva Bhutanam, all kinds of living entities. So these are the three things that Krishna is the enjoyer of all the sacrifices and tapasyas. Krishna is the controller of all the planets, and Krishna is the well-wisher of everyone. So if somebody understands these three facts, Gyatva Mam Shantim Richati. Na? Gyatva Mam, right? Mam is me. Na, that I am the enjoyer, and I am the controller, and I am the well-wisher of everyone. If somebody knows it, then he can have a Shanti. He can have peacefulness in his life. This is the shloka. Na? So this is a like shloka very much quoted by Srila Prabhupada also, and Prabhupada has only propagated this as a peace formula. That this is a peace formula given in the Bhagavad Gita. Okay. So now let us see how this is a peace formula. Very important. See, see in this world generally, what do we think? That suppose if there's a conflict between two parties, then how can there be peace? There needs to be a talk between both of the parties, and then there can be some peace. So by some outer means there can be some peace. By some talks, by some by some talks, by some arguments, there can be a uh, uh, there can be a scope of peace. But here Krishna is telling that actually the peace will not come from the outer arrangements, but the peace will come from the inner arrangements. When see, suppose two countries, they are getting into some conflict. Okay, they come together, they discuss the issue, and then they try that okay, let us resolve this issue, and they suppose resolve the issue. So now externally they may resolve the issue, but it will not remain for a long time. Because what happens after some time again, the dominating mentality or the enjoying mentality again forces one country to again interfere with the interest of the other country. So, so, so these external means can only temporarily give a peace. So what is needed is one needs to have an inner peace first. When there is an inner peace, when the heart is purified, when the when a person is satisfied within, when the heart is satisfied, then what will happen? Then automatically that inner peace will also bring the outer peace. The inner peace will lead to the satisfaction. Like suppose if I'm not having exploitative mentality, my heart is pure. I don't have exploitative mentality, so I'm happy within, I'm satisfied within. Then what will happen? Then externally also I will be peaceful. But if I'm not internally, I'm not purified, internally I'm not satisfied, internally I'm not peaceful, then there can be no scope of the external peace. Okay. So here Krishna is telling about how can one have this inner peace, which can ultimately lead you to all kinds of outer peace also. Okay. So that can happen. So for that, see what is the thing? So see here. So what is required is one has to have a peace with God. If we want to have peace, inner peace, then we have to have peace with God. So in this world, what is happening is, we are not living in harmony with the desire of the God. Krishna has sent us in this world with a certain purpose. But what is happening is because we are not living in harmony with that purpose for which Krishna has sent us in this world. So then what happens is it leads to the disharmony at all different levels. There's a disharmony between the people, between the families, between the communities, between the people of different religions, between different nations. So why this disharmony is there? Because ultimately, uh, an individual is not in harmony with the God, which means what? We are not following what God desires from us. We are trying to go against the will of the Lord. So in essence, you will find he ultimately Krishna he's the one who possesses all this creation. Everything is the property of Krishna, and ultimately he is in control of all this world.
and he's meant to be the enjoyer of all this world. But we, in our illusion state, what is happening is we are trying to enjoy this world. We are trying to have control over this world. We are trying to have proprietorship over this world. So in that way, we are trying to compete with Krishna, compete with God, which is not the goal we are sent here for. The goal why we are sent here is so that we realize that how we cannot be competitors to Krishna. We can only be cooperators in his enjoyment. When we cooperate with Krishna's enjoyment, then we will be happy and peaceful. This is very important. That this is how when we will have peace with God, which means when we will be ready to accept our position as a servant of Krishna, as a cooperator of Krishna's enjoyment, then what can happen? Then we can have an inner peace, and then there can be a scope for the outer peace. So this is very important. That how now if you want to have peace, then you have to have a make peace with the God, which means you have to accept that Krishna is the enjoyer, Krishna is the proprietor, and Krishna is our best well-wisher friend. We have to understand this. Then we can have internal peace in our life. Now you see, in this world, we try to make different plans. We try to make different plans. No, we want to enjoy in different ways. We make different plans. And what happens? The very nature of this world is that those plans don't work out the way we want always. है ना? So then what happens is, then we develop some kind of anguish, we develop some kind of anger, or some kind of disappointment, frustration. So generally, you will find in this world, when we are trying to look for certain results, when we have certain plans, and when those plans don't fructify, then what happens is, we develop some disappointment, we develop some anger, and that is called as the resentment. That is called as a resentment. Resentment मतलब कि नाराजगी, रोष, गुस्सा. राइट, हमने कुछ प्लान सोचा, लेकिन वो उस तरह से जब नहीं हो पाता है, तो हम लोग के अंदर में गुस्सा होता है, नाराजगी होता है. राइट, तो वो जो नाराजगी है, गुस्सा होता है, वो 3 डायरेक्शंस में जाता है. राइट, पहला जाता है बाहर के लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए. राइट, द पीपल बिकॉज ऑफ विच वी कुडंट फुलफिल अवर प्लान. ऐसे लोग या फिर ऐसी चीजें जिसने हमारे प्लान को फुलफिल नहीं होने दिया. राइट, उनके प्रति हमारे अंदर में क्या जाता है, एक नाराजगी का फीलिंग होता है. तो जब दूसरों के प्रति हमारे अंदर में एक इल फीलिंग होता है, नाराजगी होता है, then we cannot be peaceful with them, because more than those people, it harms us. We can never have a peace of our mind. So this is one thing, that our resentment is directed outwards, towards other people and towards other things. No. Second thing is what? So that leads to what? That leads to anger, and that leads to the revenge, the feeling of revenge. That उन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया, हम भी उनके साथ में ऐसा करेंगे. तो इस मेंटेलिटी में क्या हम पीसफुल नहीं रह पाते हैं. ठीक है, दिस वन थिंग, दैट अवर रिसेंटमेंट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. सेकंड थिंग इज our resentment is sometimes directed inwards. What happens is, we had made some plans and we were not able to perform the way we wanted to do. Then what happens? We develop narazgi, gussa for ourselves. We feel helpless. We feel very sorry about ourselves. We feel inferiority complex. We feel depression. We feel stressed. We feel very anxiety. We want to go for suicide. So there is, so this second case is, the resentment is inwards. It is directed inwards. We blame ourselves for all the failures and all. That is again it is not a peaceful situation. Okay. And third thing is, third thing is, our resentment may be directed towards the upwards. Upward means towards God. Why God did like this in my life? I wanted the things to happen in this particular way. Why God is not allowing me to do like that? Why Krishna is not cooperating with my plans? Right. So there is a resentment or anger directed towards Krishna. Now, so see all these ways, all these 3 ways by which our we have resentment, either to the other people and the objects around us, or internally to us, or towards the God. What happens is that does not allow us to be peaceful. And what happens is, in such a situation, we cannot accept the help. Even if Krishna is trying to give us some help, we cannot accept that help. Right? So help will come in our life in the form of knowledge. So help will come in our life in the form of knowledge. When we have knowledge and when we have faith upon Krishna, then what will happen? Then we will be helped. But if we don't have faith, we don't have knowledge. Knowledge means why Krishna is acting in this particular manner. Now, when we don't have trust, now
So that's why we have to have a trust that how Krishna is our best well-wisher. So apparently, even if something is not going the way I was trying or I was desiring, still it is for good. It is good for me. It is good for everyone. Even if suppose somebody else is trying to harm me, understand that Krishna is sanctioning it, and it is good for me, and it is good for him also, because Krishna is a well-wisher of everyone. He's a well-wisher of me. He's a well-wisher of others also. So if we have faith upon this knowledge, that how Krishna is the well-wisher of everyone and Krishna is the ultimate sanctioner. Aham sarvasya prabhavo matha sarvam pravartate. All the material and the Krishna is telling that all the material and the spiritual things are emanating from me only. Which means what? Everything, all the situations are coming through Krishna only. Krishna is sanctioning them. So now if Krishna is a Suhrid, he's a well-wisher of all of us, then whatever he will allow, that will be for good. That will be for my ultimate good, irrespective of whether I feel painful or what. Just like, a surgeon, suppose you are having a disease, you have to go for a surgery. So now a surgeon may operate you, and it may hurt you. It may be, not very painful for you. But then, if you put trust upon it, then and if you have patience, then eventually you realize that it was good that you went through that treatment, because of which you are freed from the disease. Same way, so this is very important that how, if we have this knowledge and we have faith that Krishna is our best well-wisher, then what happens? Then we can get freed from all this resentment, this narazgi and rosh. And we understand that actually, let me try to do my part. Now, what has happened is happened. Now, what cannot be changed cannot be changed. What has happened has happened. But now what I can do is in my hands, and I will try to do my best way, whatever best way I can do, and then whatever comes, let me understand that this is the best thing, and for me, because Krishna is my well-wisher. So when we have this understanding, then we can be peaceful. That's what Krishna is mentioning at that how one has to, if we have to be peaceful, then we have to develop this kind of faith upon Krishna, that Krishna is our best well-wisher and he is the best well-wisher of everyone. Okay, and when we have this understanding, then we can get freed from all the resentment, all the disappointments and the frustration, and which we hold in our system, which causes the lack of peace in our system. This is very important, that to understand that how Krishna is a Suhit. Okay, this is one thing. And also, you know, Krishna is our Suhid, and also Krishna is the enjoyer of everything. See, in this world, we are trying to enjoy. See, to some extent, we can enjoy because we are the souls. We are also meant to enjoy with Krishna. But when we try to artificially try to enjoy independent of Krishna, then that also leads to anxiety. Same with proprietorship. See, something we have to possess, right? Like, I have to eat something. So I'm possessing certain items, right? That is allowed. I'm wearing this clothes. I'm allowed to wear this clothes. So there are some things which we can possess. There's a limit to which we can possess the things in this world. But when we try to go for unlimited, unrestricted possession in this world, just like you'll find Hitler was there, trying to conquer more and more of the lands. So when we try to do more possession than what we really need, then also that leads to the anxiety. So Krishna is saying that don't go for this unrestricted proprietorship. Don't go for this unrestricted enjoyership. And don't try to go for unrestricted controllership. Understand it at how ultimately Krishna is the enjoyer, Krishna is the proprietor, Krishna is the controller. है ना? So then we will be able to have a peace of mind. That's what Krishna is mentioning here. Okay. Okay, so I have written these points. You can refer it. So that's what we discussed. Okay, so this is one thing, that this will lead to the peace, that how when we will have peace with God, which means we're not competing with the God to be a proprietor or enjoyer or a controller, and we accept that I am a servant of Krishna, I'm supposed to serve Krishna. If we have this consciousness, and we are having faith upon Krishna that Krishna is my best well-wisher. Whatever is coming through Krishna is for my best. If we have this trust and we move with this trust, then what will happen? And we don't carry any resentment for other people or for ourselves or for God or for Krishna, then we will be very having great peace in our mind. So this is one thing. Also in this shloka, Krishna is also see, this is a shloka. So Krishna is also again stating that how he is the ultimate goal of all the different paths.
He's the uniting factor for all the different paths, right? Just like, previously also we have discussed on shloka, ye yatha mam prapadyante tam tathaiva bhajamyaham mama vartamanu vartante manushya partha sarvasha. Krishna was mentioning that how ultimately everyone is following my path only, which means what? Ultimately, the karma yoga, the gyan yoga, the karma kanda, ultimately they are meant to help a person come closer to Krishna only. Same way here also Krishna is again stating that how he is the ultimate goal of all the different paths. He is the uniting factor of the different paths, right? For example, let us say, see, so like see yajna and tapsam. देखिए, यज्ञ कौन करने वाले हैं? जो कर्म कांड करने वाले लोग हैं। जो कर्मकांड करने वाले लोग हैं वो यज्ञ करने वाले हैं, राइट? और जो कर्मयोगी होते हैं, कर्मयोग जो कर रहे हैं वो लोग भी यज्ञ वज्ञ कर सकते हैं। तो कृष्णा बता रहे हैं कि आई एम द भोक्ता, आई एम द एंजॉयर ऑफ द sacrifices which is done by the कर्म कांडीज एंड द कर्म yogis. So ultimately those offerings, they come to me only, right? So in that way Krishna is the ultimate receiver of the he's the ultimate receiver of the sacrifices of the karma kandis and the karma yogis. Okay. Second thing is like tapsas. So those who are Gyan yogis, they do tapasyas, they will remain celibates, they will study the Shastras, no, they will take some other bodily austerities, right? Even Ashtanga yogis also you'll find, right? So Krishna is the ultimate, again, Krishna is the one who is offered all these tapasyas. Krishna is mentioning that I accept those tapasyas. Those tapasyas are being offered to me only. Okay. And then Sarva Lok Maheshwaram, right? Lok means what? Different planets. So those who are demigod worshippers, right? The demigod worshippers, they desire to go to the Swargaloka, isn't it? So Krishna is mentioning that how I am the ultimate one who is maintaining all these different planets. So in that way, I am the ultimate. Ultimately, the demigod worshippers are also going to get the different lokas by my grace only. Okay, and also Suhridam. Okay, Suhridam का मतलब होता है तो well wisher, right? Suhrid जिसको बोलते हैं, right? And Suhridam also means that Hidam means what? ना हृदय, जो हृदय में स्टे करते हैं. Who is that? That is परमात्मा. So परमात्मा is the goal of the अष्टांग योगिस. A.Y means अष्टांग योगिस और ध्यान योगिस, right? जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं अष्टांग योगा से परमात्मा पे कॉन्सेंट्रेट कर लेने के लिए. So in that way, he's a suhridam. See, the word is mam, gyatva mam, right? If one knows me, what one knows that I am the one, I am the goal of the karm kandis and karm yogis, and I am the goal of the gyan yogis, I am the goal of the ashtang yogis, right? So in that way, so Krishna is the ultimate goal of all these different people. That's what Krishna is mentioning. So in that way, uh, and ultimately Krishna is sarva, and he's a sarva bhutanam. He's the goal of everyone. So in that way, Krishna is the ultimate person, ultimate unifying purpose, unifying person. Okay. See in the purport, please read the blue part. Anyone? Under the spell of illusion, living entities are trying to be lord of all the survey, but actually they are dominated by the material energy of the Lord. The Lord is the master of material nature, and the conditioned souls are under the stringent rules of material nature. Unless one understands these bare facts, it is not possible to achieve the peace in the world, either individually or collectively. Which is the sense of Krishna consciousness. Lord Krishna is the supreme predominator, and all living entities, including the great demigods, are his subordinates. One can attain perfect peace only in complete Krishna consciousness. So he is the supreme predominator, right? Supreme enjoyer, and we are predominated, right? He is the uh, we are meant to be a cooperator in his enjoyment. That is being spoken. See, read, पढ़िए पढ़िए. Krishna consciousness, however, brings one into spiritual life even while one is within the jurisdiction of matter, for it is an arousing of spiritual existence by its practice in the material world. तो देखिए जो बाकी बात को फॉलो करने वाले लोग हैं ना, लाइक वो आफ्टर लिबरेशन है ना, आफ्टर गेटिंग rid of this material world, then they will be able to have a spiritual existence. Like somebody is aspiring for the Brahma Jyoti. When he will leave this world, then he can go to the spiritual platform. He can go to the Brahma Jyoti and he can be like, he can be on the spiritual platform. But one who is practicing the bhakti yoga, even while in this world, we are into the spiritual world because we do the same activities of the spiritual world. We do the activities of the liberation. So that's why it is saying, that
Krishna consciousness brings one into spiritual life even while one is within the jurisdiction of the matter, which means material world. Even while in this material world, no, we become spiritualized. Our existence becomes spiritualized, which means what? We are performing our spiritual functions of life. Okay. The last one you see, okay, there's a gradual process of elevation in the practice of the yama, niyama, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, and samadhi. This is Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga means the yoga which consists of these 8 steps. But these only preface perfection by devotional service, which alone can award peace to the human beings. It is the highest perfection of life. So ultimately, Bhakti Yoga is the culmination. Bhakti Yoga is the ultimate thing. So with this, I end this chapter. So this is a, so again, so this shloka, Krishna has mentioned about the bhakti, that mam, right? Krishna is saying that if somebody worships me, somebody understands me as the enjoyer and all. So here Krishna has given a reference to the Bhakti Yoga, about which Krishna is going to elaborate from 7th chapter onwards. But before that, next chapter is now about the Ashtanga Yoga. Okay, let us start with the next chapter. So see now, Krishna has spoken something about the Ashtanga Yoga. Krishna has just given a preface to the Ashtanga Yoga. Now Krishna is going to elaborate this now in this chapter. No, see what is the connection? See, Krishna has told about the Nishkam Karma Yoga till now, and Krishna has told, let's see, Arjun, for you it is the best thing that you perform the Nishkam Karma Yoga. And if somebody is performing Nishkam Karma Yoga, fixing one's mind upon the Supreme, then he is already liberated. He is also liberated. He will also get liberated. He's also as good as liberated. So this is the best thing for you. But now Krishna is saying it actually, no, and now Krishna is going to describe about what are the stages beyond this. Now there are some stages which are beyond this. So if somebody is having Nishkam Karma Yoga, one can also become a Gyan Yogi. One can also become a Dhyan Yogi, where a person is now, where a person can even renounce doing the activities. Even in the Nishkam Karma Yoga, a person is performing the activities. But if somebody becomes very much purified, there's other path also. There's other path also where one does not have to indulge into any activities. One can, those paths are what? The path of the Gyan Yoga and the path of the Ashtanga Yoga. So in this chapter, Krishna is not telling about the Ashtanga Yoga, where a person can give up all the activities, prescribed activities, Varnashram duties, the prescribed duties, the Varnashram duties. And one can perform the Ashtanga Yoga, one can have meditation upon the Supreme within the heart. Right? So that is also another path. Okay. That's what Krishna is going to mention here. So this chapter is about Ashtanga Yoga, है ना? उसी को देखो ध्यान योग भी बोलते हैं हम ना, अष्टांग योग या फिर ध्यान योग भी बोलते हैं. और तो इसमें ओवरव्यू में फर्स्ट 9 वर्सेस में कृष्ण से अबाउट आरुरुक्षु टू आरूढ़ा स्टेज. राइट. देखिए आरूढ़ का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी. तो आप सीढ़ी पे एक तो चढ़ रहे हो और एक चढ़ चुके हो. तो जो चढ़ चुके हो उसको बोलेंगे आरूढ़. क्योंकि देखिए जो योगा भी पूरा जो हम सीख रहे हैं, इट्स लाइक इट इज कंपेयर्ड विद द लेडर. योगा लेडर हम लोग बोलते हैं. राइट. तो तो आरूढ़ का मतलब है कि जिसने परफेक्शन को पा लिया, जो सीढ़ी पे चढ़ चुका है, विच मीन्स व्हाट, जिसने वो योगा को परफेक्शन प्राप्त कर लिया है. इस चैप्टर में पर्टिकुलरली अष्टांग योगा, वन हु हैज रीच्ड द परफेक्शन ऑफ द अष्टांग योगा. ओके. एंड आरुरुक्षु मतलब कि चढ़ रहा है, अभी क्लाइम कर रहा है वो. राइट. प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिस कर रहा है. तो दैट इज प्रैक्टिसिंग एंड दूसरा है परफेक्ट. प्रैक्टिसिंग स्टेज एंड द परफेक्ट स्टेज, ये 2 वर्ड्स के लिए यूज किया गया है ना. तो फर्स्ट 9 वर्सेस में बता रहे हैं कि कैसे, how one how can how can how can one begin the Ashtanga Yoga, how can he how can one move from the beginning stages to the perfectional stage. ये फर्स्ट 9 श्लोकास में डिस्क्राइब किया जा रहा है. एंड देन 10 to 32 श्लोका में बता रखा है कि फ्रॉम प्रैक्टिस टू द परफेक्शन इन द योगा. राइट. तो उसमें भी फर्दर अष्टांग योगा भी में भी initially one may have realization of the Brahman, then one may have realization of the Paramatma, and ultimately one has to come to the platform of realizing the Bhagavan. Okay. And then further section is about how the mind poses a great obstacle for one to perform the yoga. So how one can deal with the mind. That is the theme of the next shlokas. And then next set of the shlokas is talking about ki, in case if a person deviates, if a person who is performing the yoga, if he deviates because of his uncontrolled mind, then what is going to be his destination? No. Will he lose all the results of the activities which he has performed? So that is being spoken here. And the last one is Krishna is telling about that who is the topmost Astang yogi, who is the topmost yogi. That is a bhakti yogi, one who is fixing his mind upon Krishna. Okay. So now
So first shlokas, तो देखिए जो पहले दो श्लोकास में ना, कृष्णा इज अगेन कृष्णा इज अगेन सी द अष्टांग योगा इज वेरी डिफिकल्ट. See, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, they are difficult paths. Karma Yoga is the easier path. While you are performing the activities, you are nishkam, you are freed from the attachments, and you are still performing the activities. It is easier path. But Jnana path and Ashtanga path are difficult paths. So Krishna is again describing that how you see, Krishna is now going to describe about the Ashtanga Yoga. Before that, Krishna is saying that you see that Karma Yoga is a better path. So these first two shlokas, Krishna is again mentioning that how a Karma Yogi is also very good. Karma yoga is better. A person who is performing karma yoga is better, than becoming a ashtanga yogi. So first shloka, you see. Shri Bhagavan uvacha anashrit karma phalam anashrit karma phalam karyam karma karoti yah sa sannyasi cha yogi cha na niragni न चाक्रियः. देखिए यहाँ पे भी दो वर्ड आ रहा है, सन्यासी एंड योगी, है ना. पिछले चैप्टर में भी आपको पता होगा, शुरू में आ रहा था ना सन्यास और योगा. तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है दोनों चैप्टर्स में जो बताया गया है. पिछले चैप्टर में व्हेन कृष्णा वाज रेफरिंग टू सन्यासी, इट वाज मेंट फॉर द कर्म सन्यासी और अ ज्ञान योगी. रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड इट. अ ज्ञान योगी, है ना, व्हेन ही बिकम्स वेरी मच एडवांस्ड, देन ही बिकम्स फुल्ली फ्रीड फ्रॉम द डिजायर फॉर एंजॉयमेंट, and then he can renounce all kinds of activities. Even mentally also he is not meditating upon any desires, any activities for sense enjoyment. So he is called as a karma sannyasi. No, that's right. No, that's the advanced stage of the Jnana Yoga. It's a Karma Sannyasi. And the yogi in the previous chapter was about for the Karma Yogi or Nishkam Karma Yogi. पिछले चैप्टर में योगी मीन्स निष्काम कर्म योगी और कर्म योगी, एंड सन्यासी वाज मेंट for the person who has given up all kinds of activities, advanced ज्ञान योगी. ओके. नाउ यहाँ पे लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग वे में बताया जा रहा है. यहाँ पे किसके लिए रेफर किया गया है ना. यहाँ पे सन्यासी का मतलब बताया गया. यहाँ पे सन्यास बेसिकली क्यों रेफर किया गया. सन्यास इज फॉर अ पर्सन हु इज रिनाउंस्ड इन हिज माइंड फ्रॉम द डिजायर्स फॉर द एंजॉयमेंट्स. देखिए सन्यासी भी वही होता है. सन्यासी मतलब क्या है, जिसके मन में भी इच्छाएं नहीं है एंजॉय करने की, भौतिक इच्छाओं को एंजॉय करने की इच्छा नहीं रह गई है, तो सन्यासी बोला जाता है. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली सन्यास उसके लिए बताया जा रहा है, दैट अ पर्सन हु इज रिनाउंस्ड इवन इन हिज माइंड टू एंजॉय एनीथिंग मटेरियल, दैट्स अ सन्यास. ओके. एंड यहाँ पे योगी किसके लिए बताया गया है. योगी मीन्स मतलब योगी, योगी इज फॉर व्हाट. प्रोपर ने कैसे ट्रांसलेट किया इसको. योगी योगी, हाँ योगी यहाँ पे पता है मिस्टेक है ना. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये यहाँ पे जो योगी यूज किया गया वो दैट्स फॉर अष्टांग योगी, अष्टांग योगी के लिए. बट मोर अप्रोप्रिएटली एज ऑफ नाउ, योगी मीन्स बेसिकली वन हु इज कनेक्टेड विद द सुप्रीम, राइट. योगा मीन्स टू लिंक विद द सुप्रीम. तो yogi means a person who is connected with the supreme. Okay. In this chapter it's going to be describing about the ashtanga yogi. But now here in these two shlokas, Krishna is more referring to the Nishkam Karma Yogi. First two shlokas, Krishna is referring to the yogi means Nishkam Karma Yogi. So Krishna is continuing the theme that how Nishkam Karma Yoga is better than taking to the Ashtanga Yoga or Jnana Yoga because they are difficult paths. Okay. So see now what Krishna is mentioning in this shloka. Now, anashrit karma phalam karyam karma karoti yah. Right. Right. कर्म फलम मतलब कि फ्रूट्स, कोई भी जो कार्य करते हैं उसके फल पाने की जो इच्छा है. राइट. अनआश्रित, आश्रय नहीं लेता है वो उसका, मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं है. और विच मीन्स बेसिकली वन इज डिटैच्ड. तो वन इज डिटैच्ड फ्रॉम द डिजायर फॉर द कर्म फल एंड ही परफॉर्म्स हिज कार्यम. कार्यम कर्म करोति यह. राइट. अ पर्सन इज परफॉर्मिंग हिज कार्यम. कार्यम मीन्स हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज. Prescribed duties means like brahmanas are given prescribed duties, kshatriyas are given prescribed duties, right? तो निष्काम कर्मयोगी क्या करता है, वो अपनी ड्यूटीज करता है. राइट. लाइक अ पर्सन इज अ ब्राह्मण. Now he is a Nishkam Karma Yogi and he is a Brahmana, then he will do the activities of the Brahmana. Now, if he is a Vaishya, he will do the activities of the Vaishya. Right? So that is called as a Karyam. Karyam is prescribed duties. So one will do the activities, but he is not attached to the results. He is not taking shelter of the result. He is not dependent upon the results. That person is a sannyasi. He is a sannyasi. He is a renunciate. He is in the renounced order. Why? Because he has no desire for enjoyment. He is detached from the fruits. So that's why he is sannyasi. So he has no attachment to the results. And he is the yogi also. He is also yogi. Yogi in the sense again, he is connected with the supreme. No, न निरग्निर न
च अक्रियः, right? So a person who is not dependent upon the results of one's activities, he is a sannyasi and he is a yogi, है ना? He is a yogi, not a person who does not nir agnir, one who does not light any fire, or na cha akriha, or not the one who does not do any duties, right? जो व्यक्ति अग्नि नहीं जलाता है या फिर जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है वो सही में सन्यासी या योगी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बिना क्या बोलते हैं बिना कर्म फल की इच्छा के कर्म करता है वो सही में सन्यासी और योगी, ऐसा भगवान बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों दिया गया है अग्नि और चक्र का? वो सिंपल है, इसका देखिए यहाँ पे बताया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं इसके बारे में, पढ़िए, एनी ऑफ यू प्लीज रीड In द ब्लू पार्ट। commencing the practice of Ashtanga Yoga, one should not suddenly give up Nishkam Karma Yoga, which purifies the heart. ठीक He है, who पहली बात per- ये है, भगवान ये क्यों बता रहे हैं वापस के देखिए। ठीक है, किसको अगर अष्टांग योगा भी परफॉर्म करना है तो इमीडिएटली वो अष्टांग योगा ना करना स्टार्ट करे, राइट? वो निष्काम कर्म योगा करे, पहले एक्शन कर रहा है, वो एक्टिविटी एक्टिव है, डिटैचमेंट के साथ में वो एक्टिविटीज कर रहा है, फिर वो कहीं जाके उसको ले सकता है ना अष्टांग योगा को। ठीक है, गो अहेड। he who performs actions prescribed by the scripture as inescapable duty, karyam karma, without expectation of results, anashrita karma phalam, is called a sannyasi, since he renounces the results of his actions. He is called a yogi because his mind does not dwell on the enjoyment of objects of the senses. A person who merely renounces actions such as the fire sacrifice is not called a sannyasi, nor is one who merely half closes his eyes without external bodily activity a kriya called a yogi. हम्म, उसे सन्यासी मतलब बताया अगेन, नो, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट्स, राइट? तो कोई व्यक्ति अगर कुछ कार्य करता है बट उसमें फल की इच्छा नहीं करता है तो वो सन्यासी है ना? बिकॉज ही इज रिनाउंसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन, राइट? और यहाँ पे योगी स्पेसिफिकली क्यों बता रहे हैं? बिकॉज अगेन योगी मीन्स ही इज डिटैच्ड इन हिज माइंड इज नॉट फिक्स्ड। ठीक, अब यहाँ पे क्या है देखिए, व्हेन अ पर्सन एडवांसेस इन द योगा देन ही मे बी एबल टू मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम। समझे आप? देखिए जैसे जो कर्म योगी है ना, शुरू में जो कर्म योगी है ना, ही मे नॉट बी सो मच नोइंग अबाउट, ही मे नॉट बी सो मच अवेयर अबाउट द सुप्रीम। दैट्स व्हाई विल फाइंड इन द लास्ट चैप्टर वी डिस्कस ना, one performs निष्काम कर्म योगा फर्स्ट he fixes his mind upon the आत्मा। देखिए पहले शुरू में उसका मेडिटेशन ये नहीं है कि भगवान पे मेडिटेशन नहीं है उसका, शुरू में उसका मेडिटेशन है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, है ना? दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट मेंट फॉर मी, दिस विल नॉट गिव मी द एंजॉयमेंट ना। ही इज नॉट सो मच अवेयर अबाउट द परमात्मा, द सुप्रीम, right? So that is the beginning stage, and eventually as one advances then he can become more conscious about the परमात्मा, right? जो पिछले चैप्टर में भी हमने देखा। तो यहाँ पे जो योगी की बात करें, योगी मतलब क्या है? द पर्सन हु हैज नो डिजायर्स फॉर एंजॉयमेंट इन हिज माइंड, एंड सन्यासी मींस ही इज डिटैच्ड फ्रॉम द डिजायर्स फॉर एंजॉयमेंट। ओके, तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात किया जा रहा है। एनीवेज, देखिए, अ पर्सन हु merely renounces actions such as the fire sacrifice is not called a sannyas। देखिए यहाँ पे क्यों बताया गया है? जैसे जो गृहस्था होता है ना, गृहस्थ के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने के लिए बताया गया शास्त्र में, वो उनका प्रिस्क्राइब ड्यूटी है गृहस्थ के लिए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए जो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं कर रहा है, ना निरग्नि मतलब कि गृहस्थ के लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं यज्ञ करना, तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं कर रहा है वो सन्यासी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, राइट? जिसके मन में इच्छा नहीं है फल को पाने की कर्मों से, वो सही में सन्यासी है, राइट? क्योंकि आर्टिफिशियली कोई अपनी एक्टिविटीज करना छोड़ सकता है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, बट जरूरी नहीं है कि वो क्या बोलते हैं वो उसके माइंड में भी वो डिजायर्स नहीं रहेगी, यानी उसके मन में एक्टिविटीज हो सकती है, डिजायर्स रह सकती हैं। इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है निरग्नि मतलब बेसिकली वन इज, इट्स नॉट दैट वन कैन जस्ट गिव अप वन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एंड कैन बिकम अ सन्यासी, राइट? अपना जस्ट अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज छोड़ देना और सन्यासी बन जाना, ऐसा नहीं है, राइट? प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हुए भी वो जो रिजल्ट से उसे अटैच नहीं रहना, अगर अटैच नहीं है तो वो सन्यासी कहला जाएगा, पहली बात तो ये। और ये जो अक्रिय वर्ड यूज किया गया है, अक्रिय, राइट, बिना एक्शंस के, ये इसके लिए यूज किया गया है। नॉट इज वन हु merely half closes his eyes without external bodily activities is called a yogi, right? देखिए ये योगी के लिए बता, अष्टांग योगी के लिए बात किया जा रहा है, right? अष्टांग योगी, right, he is supposed to do meditation now with half closed eyes, right? He will not do any kriya, he will not do any activity with the body, वो कुछ बॉडी से कुछ एक्टिविटीज नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा वो, राइट ना? और वो क्या करेगा? मेडिटेशन करने का ट्राई करेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ कोई अगर एक्सटर्नली कर रहा है तो वो सही में अक्रिय नहीं है, राइट? क्योंकि क्या उसका मन भी प्यूरिफाइड नहीं है, तो मन में वो बहुत सारे एक्शंस कर रहा है वो ऑलरेडी, राइट? लेकिन जिसके मन में भी कोई वो एक्शन नहीं कर रहा है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं रह गई सेंस एंजॉयमेंट की, वो एक्चुअल में योगी है, राइट? एक योगी जो जस्ट
है ना, आंखें बंद करके बैठा है और क्या बोलते हैं, और कुछ बाहरी रूप से कुछ एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, और जिसका माइंड प्योर नहीं हुआ है, मन में उन सब चीजों के बारे में सोच रहा होगा, तो एक्चुअली ही इज नॉट अ योगी। लेकिन जो मन में, जिसने बाहरी रूप से भले वो एक्टिविटीज भी कर रहा है, बट उसके मन में क्या है, कोई इच्छा नहीं है सेंस एंजॉयमेंट की, तो वो एक्चुअल में योगी है। Right? Again, Bhavan basically, again, Krishna is again, mentioning about the glory of a Karma Yogi, that how Karma Yogi is also very great, because a Nishkam Karma Yogi, he is actually a sannyasi because he has no desires for sense enjoyment. He does not desire the results of his activities. And he is also a yogi because in his mind, he's fixed in the spiritual knowledge. In his mind, he has no desire for material sense enjoyment. He's a yogi and he's a sannyasi. That's how, so Krishna is glorifying the Nishkam Karma Yoga. ये बताया गया यहाँ पे, okay? I think just you can read the blue part, Prabhupada's purport. The The parts of the parts. body work for the satisfaction of the whole body. The limbs of the body do not act for self-satisfaction, but for the satisfaction of the complete whole. Similarly, the living entity who acts for the satisfaction of the supreme whole and not for personal satisfaction is the perfect sannyasi, the perfect yogi. Okay, The okay, sannyasis. I think I explained to you this, what is there, and I explained, I think we can move to the next step. Okay, this we can read, this is what Prabhupada is saying. A Krishna conscious person has no desire for the self-satisfaction. His criterion of the success is the satisfaction of Krishna, and thus he is the perfect sannyasi or the perfect yogi. Right? Lord Chaitanya, the highest perfectional symbol of renunciation, prays in this way. देखिए, when in terms of the bhakti yogi, so bhakti yogi is also a sannyasi because in his mind there is no desire. He's not attached to the activities. He's not attached to the results of his activities. And all the more, he's also offering those results to Krishna. So this is the difference between a bhakti yogi and an ordinary yogi. An ordinary yogi, in his mind, there is no desire for enjoyment from the sense objects, but he may not have so much desire to offer them to Krishna, or offer them to the Supreme. But a bhakti yogi, he's a true yogi in the sense that he's not only detached in his mind, but he's also attached to give satisfaction to Krishna. That's the point, right? जैसे ये जो श्लोक भी है चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया कि न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये. So see, these first two lines they're talking about the detachment, that one has no desire for sense enjoyment, right? And the second two lines, Mam Janmani Janmanishware Bhavatar Bhaktir Ahetukitvai. This is talking about the attachment, then offering to Krishna. That my only desire is to offer devotional service to Krishna. That's the point. Prabhupada is bringing out the point that how a bhakti yogi is the highest in the sense that he is a sannyasi. He has no desire for the results of his activities, and he offers everything to Krishna's satisfaction, in that way. So this is the first. Again, second shloka. Again, Krishna will further explain. है ना? Krishna will again further explain about this concept. यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न हि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. Krishna is telling that how the sannyas. Krishna is telling that how the yoga and the sannyas are same only. The yoga and the sannyas are same. Krishna is mentioning. See, yam sannyasam iti prahur, right? The one which is called as sannyas. Yogam tam vidhi Pandava, right? What is known as the sannyas, understand that it is the yoga, it is only the yoga. It is also the yoga, which means sannyas and the yoga are the same. Why? Because what? Nahi asanyasta sankalpo yogi bhavati kaschana, right? Asanyasta sankalpo. संकल्प का मतलब होता है कि डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स, ओके. असन्यस्त संकल्पों को देखिए क्या होता है, विदाउट गिविंग अप. Sankalpa means desires for the sense gratification or self satisfaction, So nahi asanyasta sankalpo yogi bhavati kashana, right? So, person cannot become a yogi unless one becomes freed from the desires for the from the sense satisfaction. So Krishna is mentioning that how sannyas and yoga are same because unless a person becomes a sannyasi, unless a person gives up the desires for the sense enjoyment, one cannot be called a yogi. राइट. फॉर एग्जाम्पल भाई, जब तक आपके मन में सेंस एंजॉयमेंट की डिजायर्स है, तो आपको सन्यासी बोलने ही जा सकता है ना, राइट. तब तक आप योगी भी नहीं बन सकते हो, तब तक आप अपने मन को किसी और में लगा ही नहीं सकते हो, सुप्रीम पे लगा ही नहीं सकते हो, राइट. जब आपके मन में सेंस एंजॉयमेंट की डिजायर्स नहीं रहेगी, तभी एक स्कोप है कि आपका मन में आप सुप्रीम पे आप मेडिटेट कर पाओगे. पॉइंट क्या है कि इफ somebody wants to be a yogi
which means somebody wants to be connected with the supreme, then one has to be a sannyasi. One has to be one has to give up the desires for the sense enjoyments. वही भगवान यहाँ पे बता रहे कि कैसे, how both of them are same, because until unless a person is not a sannyasi, unless a person is not freed from the desires for sense enjoyment in his mind, then one cannot be a yogi, one cannot have connection with the supreme. That's what Krishna is mentioning, you see. Just like suppose, uh, if there is a light, suppose in a room there is a darkness, so if there is light, then there is no question of darkness. If there is no light, there will be only darkness. Same way, if there is no sannyas, there is no question of yoga. If there is sannyas, then there can be a yoga. So in that way, both of them are same only, because if there is no sannyas, there can be no yoga. If there is yoga, it means there is sannyas is already there. If a person is able to meditate upon the supreme, it means he's not meditating upon the material things. That's what Krishna is mentioning here. See, proper translation. What is called renunciation, you should know to be the same as the yoga, or linking oneself with the supreme, O son of Pandu. For one can never become a yogi unless he renounces the desires for the sense gratification. Right? Very clear. Prabhupada is mentioning the purpose. Please read, one of you. Real sannyas yoga or bhakti means that one should know his constitutional position as the living entity and act accordingly. The living entity has no separate independent identity. He is the marginal energy of the Supreme. When he is entrapped by material energy, he is conditioned. And when he is Krishna conscious or aware of the spiritual energy, then he is in his real and natural state of. Therefore, when one is in complete knowledge, one ceases all material sense gratification or renounces all kinds of sense gratificatory activities. This is practiced by the yogis who restrain the senses from material attachment. But a person in Krishna consciousness has no opportunity to engage his senses in anything which is not for the purpose of Krishna. Therefore, a Krishna conscious person is simultaneously a sannyasi and a yogi. The purpose of knowledge and of restraining the senses, as prescribed in the Jnana and Yoga processes, is automatically served in Krishna consciousness. If one is unable to give up the activities of his selfish nature, then Jnana and Yoga are of no avail. The real aim is for a living entity to give up all selfish satisfaction and to be prepared to satisfy the Supreme. A Krishna conscious person has no desire for any kind of self enjoyment. He is always engaged for the enjoyment of the Supreme. One One who has no information of the Supreme must therefore be engaged in self satisfaction, because no one can stand on the platform of inactivity. All purposes are perfectly served by the practice of Krishna consciousness. Yes, so a devotee, because he understands about Krishna, he understands about his constitutional position. So then he's a sannyasi, because he's no more, he does not desire to go for sense enjoyment. And because he's offering things to Krishna, then he becomes a yogi also. So basically, one who is a devotee, he is both a yogi and a sannyasi. So anyways, so this is the thing. So this first two shlokas. So now, so Krishna is again glorifying about the Nishkam Karma Yoga, that how even if somebody wants to be Ashtanga Yogi, one should not immediately give up the Nishkam Karma Yoga, because Nishkam Karma Yoga is also very good. Nishkam Karma Yoga is also very good. Nishkam Karma Yoga, a person is acting with detachment from the things and is fixing his mind upon the Supreme. So he's also a very good platform. One even need not to change the platform to Ashtanga Yoga. That's the point. So now, see here, 6.1 is talking about the focus on the person. Same person is sannyasi and yogi. Same person is sannyasi and a yogi. Anashrita karma phalam. And second, there is a focus on the path. That both sannyas and the yoga require a common denominator. Now, what is required for both to be a sannyasi and to be a yogi? Both required same thing. What is that? Sannyasta sankalpo. That one has to be freed from the desires for the sense gratification. तो फर्स्ट श्लोका में देयर वाज अ फोकस अपॉन द पर्सन ना, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं आपको। तो अभी देखिए तो अर्जुन ने आस्क की, लेकिन अच्छा फिर कब तक, क्या निष्काम कर्म योगी को हमेशा निष्काम कर्म योगा ही करना है? क्या अष्टांग योगा नहीं कर पाएगा वो? मतलब कब कब वो अष्टांग योगा को पिकअप कर सकता है? तो फिर भगवान बताना स्टार्ट कर रहे हैं कि ना, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्स बता रहे हैं भगवान।
आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। Right? देखिए बड़ा है ना, आरुरुक्षुर, आरुरुक्षुर मतलब कि अष्टांग योगी जिसने कि अभी योगा स्टार्ट किया है। और इसको ऐसे अगर जेनरिक सेंस में अगर करें तो एनीवन हु हैज स्टार्टेड अ योगा कैन बी कॉल्ड एज अ आरुरुक्षुर। राइट, जो अभी योगा जिसने करना स्टार्ट किया है। इट कैन बी अ ज्ञान योगी, इट कैन बी कर्म योगी, है ना। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इट्स मोर अबाउट अ अष्टांग योगी, है ना। तो आरुरुक्षुर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते, है ना। कारण मतलब होता है कि मीन्स, राइट, तरीका जिसको बोला जाएगा ना। तो जो आरुरुक्षुर है, जो बिगिनर है, right, जो बिगिनर है उसके लिए क्या तरीका है एडवांस करने का, उसके लिए कर्म कारणम उच्यते, राइट। तो जो जो व्यक्ति जैसे अभी स्टार्ट करना चाहता है अष्टांग योगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो निष्काम कर्म योग करे, वो एक्टिविटीज करे, प्रिस्क्राइब एक्टिविटीज को करे। उससे क्या होगा, उसका एलिवेशन होगा। और जो योगारूढ़ जो ऑलरेडी परफेक्शन पर आ गया है, वन हु हैज रीच्ड टू द परफेक्शन ऑफ द अष्टांग योगा, तस्यैव शमः कारणम उच्यते, राइट। शमः मींस व्हाट? शमः मींस cessation of the material desires, material activities, ना गिविंग अप द material activities। तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो बिगिनिंग बिगिनिंग कर रहा है अष्टांग योगा के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करे ना। विद अ डिटैच कॉन्शियसनेस ही ट्राइज टू परफॉर्म द एक्टिविटीज। उसको करने से उसका एडवांसमेंट होगा। और जो व्यक्ति एक बार परफेक्शन पे पहुंच गया, उसके लिए क्या है, उसके लिए उन एक्टिविटी से दूर रहना, वो उसके लिए तरीका है। दैट्स द पॉइंट। मतलब वो उसके लिए वो उसके लिए वो तरीका है। See, for one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means, right? Right? निष्काम कर्म करना उसके लिए एडवांस करने का तरीका है, क्योंकि शुरू में है ना वो अभी, उसका मन अभी इतना प्योरिफाइड नहीं हुआ है, राइट। अगर वो सबसे सब अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करना छोड़ देगा, नहीं अभी उसका मन पूरी तरह से प्योरिफाइड नहीं हुआ है, तो वो छोड़ भी नहीं पाएगा। बात ये है, उसके मन में वो एक्टिविटीज उसको दौड़ाती रहेंगी, मन में उसका चिंतन चलता रहेगा, क्योंकि उसका मन अभी प्योरिफाइड नहीं हुआ है। तो इसलिए वन शुड, तो पॉइंट है कि वन शुड नॉट गिव अप द निष्काम कर्म योगा, वन शुड कंटिन्यू विद द निष्काम कर्म योगा। when one becomes very much purified, then one can give up those prescribed duties, है ना। then one can give up those material activities, that's what is being told, you know। so one who has become very advanced, the perfection, who has achieved the perfection of the ashtanga yoga, na yoga rudha, he can give up the material activities, you know, he can perform, he can give up the activities, and he can simply try to meditate upon the Paramatma in the heart. That's what is being told, you know। so for a neophyte, work is said to be the means, and for one who is already elevated in the yoga, cessation of all the mental activities is said to be the means, right? It means मतलब कि तरीका, right? तो जो जो प्रोफेशन पर आ गया, उसके लिए क्या तरीका है उस प्रोफेशन में और आगे बढ़ने का, उन एक्टिविटीज से दूर रहने का, क्योंकि उसका मन मन में वो एक्टिविटीज करने में सोच भी नहीं रहा है, उसका मेडिटेशन फिक्स हो गया है परमात्मा पे। लेकिन जो व्यक्ति शुरू में कर रहा है, उसका भी इतना मन इतना प्योरिफाइड नहीं है, एक्सटर्नली वो अगर एक्टिविटीज को छोड़ भी देगा, still what will happen is, you know, he will not be able to hold himself in his mind, he will be thinking about those activities, contemplating upon those activities। ये बता रहे हैं ना। See, please read the blue part, the first part. The process of linking oneself with the Supreme is called yoga. It may be compared to a ladder or attaining the topmost spiritual realization. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to perfect self realization in pure spiritual life. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. But all in all, the complete ladder is called the yoga and may be divided into three parts, namely Gyan Yoga, Dhyan Yoga, and Bhakti Yoga. The beginning of the ladder is called the Yoga Rurukshu stage, and the highest rung is called Yoga Rud, इसमें देखिए, Yoga Rudha. तो देखिए ये सारे अलग अलग योगाज हैं, राइट। ज्ञान योगा, अल्टीमेटली ज्ञान योगा, ध्यान योगा एंड भक्ति योगा, राइट। अब लोग कर्म योगा क्यों नहीं दे रखा है, एक्चुअली कर्म योगा का ही जो एडवांस वर्जन होता है वो ज्ञान योगा होता है, राइट। व्यक्ति कर्म योग करता है जब, then eventually he comes to the Gyan Yoga. Eventually he comes to the platform when he can give up the prescribed duties, and he can simply uh, he can simply fix his mind upon the absolute, you know, he will just study the shastras and all, you know, he can give up the material activities। इससे कर्म योगा को सेपरेटली नहीं भी कहा जाता है ना। तो कर्म योगा, क्योंकि कर्म योगा और ज्ञान योगा ऑलमोस्ट दे आर सेम, कर्म योगा ओनली लीड्स टू द ज्ञान योगा, है ना उसमें। तो एसेंशियली जो गीता है आपका, उसमें तो ये सारे योगास बता रखे, राइट। दैट इज अ कर्म योगा और ज्ञान योगा,
ध्यान योगा एंड द भक्ति योगा, ये 3 मेन योगाज हैं आपके, राइट। मोर जनरली ज्ञान योगा, ध्यान योगा एंड भक्ति योगा। तो इन तीनों योगा का जो बिगिनिंग फेज होगा, जो बिगिनर का जो फेज होगा, उसको क्या बोला जाएगा? योगा, योगा रुक्षु, राइट, जो डिजायर कर रहा है योगा में आने का। और जिसने एक बार उसका परफेक्शन पर जो आ गया, राइट, जैसे जो ज्ञान योगी है उसका परफेक्शन क्या है? ज्ञान योगी का परफेक्शन कि उसका माइंड पूरी तरीके से प्योरिफाइड हो गया है। नाउ ही इज फुल्ली डिटैच्ड इवन इन हिज माइंड फ्रॉम ऑल द मेटल एक्टिविटीज, एंड इज फिक्स्ड इन हिज knowledge of the supreme. It can be about Brahman or it can be about the Paramatma also, है ना। तो ध्यान योगी उसका भी परफेक्शन क्या है? One is able to become freed from material desires in his mind, and one is able to fix one's mind upon the Paramatma in the heart. भक्ति योगी का तो क्या है? सर्विंग कृष्णा फुल्ली, राइट। जैसे भी हमारा भी स्टेज है भक्ति योगा में, राइट, we are also the yoga rurukshus. We are also the neophytes in the bhakti yoga because our mind is not fully purified as of now. But when we become a pure devotee, that's a yoga ruda for us. No? So, Prabhupada is mentioning all such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. Right? जो भी अष्टांग योगा जो करते हैं अलग-अलग, sitting postures and all such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of the meditation, he ceases all disturbing mental activities, right? जो भी अष्टांग योगा किया जाता है, ध्यान योगा ना यम नियम धारणा ध्यान प्राणायाम वो सब जो किया जाता है, उसका पर्पस क्या है कि व्यक्ति वो उससे करने से क्या होता है कि हम अपने नो वी ट्राई टू विड्रॉ अवर माइंड विद इन, right now the mind and the consciousness is very much outside. It is into the sense gratification. But the purpose of the Ashtanga Yoga by the bodily exercises is what? That a person is able to withdraw one's mind, one's absorption from the externals to the internal. है ना? So Papa लेकिन बताया कि a Krishna conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Krishna. And being constantly engaged in service of Krishna is considered to have ceased all the material activities, right? Devotee already कृष्ण पे मेडिटेट करता है, कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहता है, राइट। जो जो अष्टांग योगी फाइनली पा पाता है, ऑलरेडी बिगिनिंग से डिवोटी उसी को कार्य को करता है। अष्टांग योगी का जो उसका जो अल्टीमेट गेन क्या है कि वो परमात्मा को देख पाए, अल्टीमेटली परमात्मा में मेडिटेशन कर पाए। और डिवोटी का तो वही मेडिटेशन होता है, वो भगवान की सेवा के लिए हमेशा काम करता रहता है। तो इसमें भक्ति योगा इज द कल्मिनेशन एनीवेज ना। यहाँ पे भगवान ने बताया कि कैसे, है ना, योगा रूढ़ से। तो देखो ये ना, आई थिंक इसके साथ हम एंड करेंगे। देखो तो देखिए हायरकी क्या है योगा का? पहला स्टेज है योगा रुरुक्षु और फिर है योगा रूढ़ा। देखिए अष्टांग योगा में मतलब आपके 8, इसमें 8 पार्ट्स होते हैं अष्टांग योगा के, है ना, 8 स्टेप्स होते हैं कह सकते हैं, राइट। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा एंड समाधि। ओके, यम एंड नियम का मतलब क्या होता है? डूज एंड द डोंट्स, राइट। यम मतलब होता है कि डोंट्स, नियम मतलब कि डूज, राइट। तो कुछ डूज एंड डोंट्स फॉलो करने होते हैं, जैसे हम लोग भी फॉलो करते हैं 4 एविटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, राइट। तो वैसे ही ना, तो देर आर सम डूज एंड द डोंट्स एट इंडिविजुअल लेवल एंड एट अ सोशल लेवल, है ना। एट कुछ चीजें तो जो अष्टांग योगी है उसको कुछ डूज एंड डोंट्स करना है, उसको कुछ पर्टिकुलर चीजें खा सकता है, सेलिबेसी को फॉलो करना है ना, जंगल में जाके रहना है, नॉर्मल लोगों से बातचीत नहीं करना है, ये सारे डूज एंड डोंट्स के पार्ट बनते हैं, है ना। राइट। फिर आसन ना, आसन में जो आपके ना, आसन इज लाइक सूर्य नमस्कार एंड ऑल देयर कॉल्ड एज आसन्स, राइट। तो ये अलग अलग प्रकार के फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं जो हमको हेल्प क्या करती है? अगेन दे हेल्प अस टू रिस्ट्रेन अवर माइंड, दे हेल्प टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड, दे हेल्प टू अगेन विथड्रॉ द माइंड फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। सिमिलरली प्राणायाम इज द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ना, अनुलोम विलोम और वो सब जो भी है। प्राणायाम जो है, देखिए जो हमारी ब्रीथिंग है वो हमारे माइंड से रिलेटेड है। तो जो हमारी प्राणायाम में जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती है वो हमें हेल्प करती है, अगेन वो भी हमारे मन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। आप प्रैक्टिकली भी आ सकते हो, राइट। सपोज आप 5 बार अच्छे से ब्रेथ लेने का ट्राई करो, देखो इमीडिएटली आपका मन ठंडा हो जाएगा, क्योंकि देयर इज अ लिंक बिटवीन अवर ब्रीथिंग एंड अवर माइंड। इट्स अ प्राणायाम, ओके। एंड देन प्रत्याहार, प्रत्याहार मीन्स व्हाट? कि सेंसेस को उनका आहार नहीं देना, which means to restrain the senses from the sense objects. That's what is the pratyahar. And then there's a dhyan, there's a dharana, there's a samadhi, right? These are all progressive steps of meditation, right? ध्यान मतलब कि भगवान पे ध्यान कर पाना, right? तो पहले थोड़े समय के लिए कर पाते हैं, फिर और बड़े समय के लिए कर पाते हैं, और फिर जिससे इस पे constantly one is able to meditate upon the supreme, that becomes the samadhi, okay? देखिए जब when we talk about the yoga rukshu, तो जो पहले के 4 स्टेप्स हैं ये आएंगे योगा रुक्षु में, न्यूफाइट स्टेट में आएंगे। और ये क्या युवा रूढ़ा के पार्ट है, राइट। जब प्रत्याहार, प्रत्याहार मीन्स वन इज फुल्ली डिटैच्ड फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स, वन इज एबल टू हैव एब्जॉर्प्शन, वन इज एबल टू हैव मेडिटेशन अपॉन द लॉर्ड।
ये उसके योगारूढ़ स्टेजेस है ना। तो यम नियम आसन प्राणायाम ये योगारूढ़ बिगिनिंग स्टेजेस के पार्ट है। और देखिए ये जो चीजें ये बाकी सारे योगा के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक वी आर परफॉर्मिंग भक्ति योगा, हमारे लिए भी कुछ यम है कुछ नियम है, हमारे लिए भी कुछ डूज हैं कुछ डोंट्स हैं ना। पर्सनल लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, और सोशल लेवल पर भी सोसाइटी के साथ में हमें कैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक ना मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। ये हो गया सोशल लेवल पर हमारे पास में कुछ डूज और डोंट्स हैं ना। तो ये इस भक्ति योगा में भी अप्लाइड करते हैं ना। आसन, राइट, हमारे पास में भी आसन है, हम लोग हमें कैसे बैठना चाहिए, चैंटिंग करने के लिए कैसे बैठना चाहिए, श्रवण करने के लिए कैसे बैठना चाहिए, राइट। तो ये जो यम नियम आसन है, और इवन प्राणायाम भी कुछ हद तक कह सकते हैं। तो all the yoga have this initial stages like pranayam. Till that I can work in the outer world. Till that I, हाँ okay हाँ, after that one can give up these duties, okay। तो हर एक योगा में ये शुरू के स्टेजेस कॉमन रहते हैं, शुरू के स्टेजेस सबके लिए रहते हैं ना। और इस स्टेज तक योगा रुष तक व्यक्ति को क्या है, ही हैज टू डू कर्मा, ही हैज टू डू द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ऑफ लाइफ, नो। देखिए एक बार जब व्यक्ति प्योरिफाइड हो गया, देन ही डज नॉट हैव टू डू प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, नो। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक इज अ ब्राह्मण, हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज आर यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। जब तक कि वो योगा रुषु है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने सेंसेस को एंगेज करे बाय प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज दी गई हैं, they are the means by which we can keep our mind and our senses engaged. So that's the yoga aruढ़ stress, no? लेकिन एक बार व्यक्ति प्योरिफाइड स्टेज पर आ गया, योगारूढ़ स्टेज पर आ गया, उसका ध्यान धारणा स्टार्ट हो गया, तब फिर वो अपने एक्सटर्नल एक्टिविटीज को भी छोड़ सकता है। यहाँ पे बता रखा है इसके बारे में, है ना। आई थिंक टाइम हो गया शायद से ना, वो ज्यादा ही हो गया भाई। कि आगे हम लोग कल पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो श्लोका चल रहा है, थर्ड श्लोका, इसमें वही भगवान योगा रुक्षु और योगा गुड़ा के बारे में कंफर्म कर रहे हैं, राइट। क्यों क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई अच्छा कब तक व्यक्ति को निष्काम कर्म योगा करना है। तो भगवान बता रहे हैं कि देखिए, जब तक कि व्यक्ति योगारूढ़ स्टेज पर है तब तक उसको निष्काम, तब तक वो एक्टिविटीज करते रहे। लेकिन हाँ, जब व्यक्ति योगारूढ़ क्या होता है, सॉरी, जब तक योगारूढ़ है, जब तक बिगिनर है, तब तक उसको निष्काम कर्म योगा करते रहने की जरूरत है। लेकिन एक बार जब वो योगारूढ़ हो गया, जब उसका मेडिटेशन फिक्स हो गया, मटेरियल डिजायर से फ्री हो गया, तो फिर वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को छोड़ सकता है, तब वो अष्टांग योगा पूरी तरीके से ले सकता है, निष्काम कर्म को छोड़ सकता है। दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर, ओके। So let's open for some questions if you have. Sorry for the little delay. Hare Krishna. Any question related to what we discussed? We discussed about the peace formula and now these three shlokas. Okay, no questions. Everyone is at peace. Bro, Yes, हाँ, Shashank Prabhu. we, You're all at peace, huh? thank you very much for this wonderful explanation. And my question is that at one place it was written that Gyan Yoga is somehow related to tapasya. Tapasya. Hmm. Hmm. Correct. So how it is, huh? My understanding is that Gyan Yoga involves like studying the scriptures, and basically tapasya is related to Dhyan Yoga. And Gyan Yoga and Dhyan Yoga are different stages. So Hmm. how is that so that Gyan Yoga also involves tapasya? Hmm. Okay. See, देखो, ज्ञान योगा में क्या है, व्यक्ति a person is trying to see ज्ञान yoga is a path of speculation. One tries to study the shastras and one is trying to understand that how I am not the body, I am the soul. So a Gyan Yogi will do different tapasya also. Like like some Gyan yogis, we have been to Badrinath. We met a Gyan, we met a impersonal follower. Now see, he will be wearing very less clothes, and इतना ठंडा एटमोसफेयर है, उसने एकदम ठंडे क्लोथ में ना, वो पानी के अंदर में जाके, ठंडे पानी के अंदर में जाके वो मेडिटेट कर रहा है कि कैसे मैं, है ना, सोहम। ही वाज टेलिंग अस दैट सी, हमने पूछा कि आपको ठंडी वंडी नहीं लगता है क्या, बोला अरे यही तो समझना है कि तुम भी वही हो जो ये है, जो ये भौतिक प्रकृति पांच तत्वों की बनी है, तुम भी तो वही है, तू ही तो वही है, वो तू ही तो वो है। तो व्यक्ति क्या है, देखो ठंडे पानी के बीच में जाके वो बैठ रहा है और अपने आप को रियलाइजेशन दिलवा रहा है कि देखो कैसे है, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आई एम द सेम, दिस बॉडी इज मेड ऑफ दिस सेम तत्वास, एंड आई हैव टू जस्ट रियलाइज दैट दिस बॉडी इज मेड ऑफ द सेम तत्वास। तो सो ही इज डूइंग द तपस्या, राइट। तो उस तपस्या से वो क्या रियलाइज करने की कोशिश करता है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। लाइक पर्पस इज ना,
a person will surround oneself with the fire, and then he will try to meditate that how I am, the body is feeling the heat, but the atma has nothing to do with the fire. Or the person is, taking to that cold water, and he's thinking that the body is, so that's how the Gyan Yogi also does the tapasya. And of course he does the tapasya of studying the shastras, speculating upon the shastras. That is also part of the tapasya. And of course in Ashtanga Yoga also there's a tapasya. Tapasya means control of the senses and the mind. That is tapasya. So Gyan Yoga also has to do with tapasya, and Ashtanga Yoga also has to do with tapasya. Both have to do, both involved. But relatively, in the path of the Ashtanga Yoga, it's more about meditation upon the Paramatma. That's the main goal. Tapasya itself is not the main goal. That's not the main ingredient. The main ingredient is the meditation. That's the Dhyan Yoga means ध्यान करना है. That's the point. Okay. Okay. और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, प्रभु. प्रभु जी, कर्म योग में प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो हैं उसका रिजल्ट भगवान को अर्पित करते हैं कुछ हाँ, पार्ट, करेक्ट. तो उसमें अर्पित कैसे करते हैं? मतलब तो जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो रेस्पेक्टिव ऑर्डर, जो सोशल ऑर्डर्स हैं, तो उसमें भक्ति की, जैसे भक्ति योग में कोर एक्टिविटीज आ जाती हैं, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, शास्त्र पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। और कर्म योग में वो एक्टिविटीज नहीं रहती हैं, केवल वो अपने ब्राह्मण का कार्य करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वही कर्म योग होता है। उसमें मतलब कुछ ये वाली एक्टिविटीज नहीं आती होंगी ना, कि भक्ति वाली श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, मतलब फल अर्पित कर कैसे करता होगा? मतलब वो ठीक है, अर्पित आपका करने में तो भक्ति आ जाएगा, मतलब वो ऐसा। हाँ हाँ ठीक है. देखो, गुड गुड क्वेश्चन. सिंपल देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट भक्ति ना, भक्ति मीन्स ना, भक्ति का देखो जो प्रोसेस है पूरा वेल डिफाइंड प्रोसेस है. भक्ति मीन्स श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, राइट, ऑल दिस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, राइट. When all these activities are performed with the consciousness of offering them to Krishna. What is the definition of the bhakti? You see, that you should know the definition of the bhakti is what? This shloka. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. What is called as the bhakti? Sarvo upadhi vinirmuktam. When one gives up all one's designations, when one understands that okay, I am the soul, I am a part and parcel of Krishna, I am meant to give enjoyment to Krishna. Now one has no more material identifications, right? Sarvopadhi vinirmuktam tat paratvena nirmalam, right? One becomes freed from all these external designations, and one is situated in one's real designation as a part and parcel of Krishna, and one tries to engage one's senses in the service of Krishna. Rishikena Rishikesha Sevanam. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchyate. Then it becomes a bhakti. So bhakti is a process in which we serve Krishna with our senses, with the consciousness that I am a servant of Krishna, I am meant to give enjoyment to Krishna. This is the path of the bhakti. Okay. So all these different activities one does. What are the different activities? Shravanam, Kirtanam, Smaranam. So all these activities are meant, they are being offered to Krishna. When he's performing them with understanding that I'm meant to give enjoyment to Krishna. That's the path of the bhakti. Okay. Now when you talk about the Karma Yoga, so see, Karma Yogi is one who follows the Varnashram Dharma. Right? वर्णाश्रम में धर्म बताया रखा है, राइट. ब्राह्मणों के लिए कुछ ड्यूटीज बताई हैं, क्षत्रियों के लिए ड्यूटीज बताई हैं ना, वैश्यों के लिए ड्यूटीज बताई हैं, और शूद्रास के लिए भी ड्यूटीज बता रखी है, राइट ना. तो पहली बात आपने बोला कि कैसे वो ऑफर कर रहा है भगवान को. देखिए, अभी ऐसा नहीं कि देखो इट्स नॉट दैट कर्मयोगी को भी पता है कि ये मैं भगवान को ऑफर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कर्मयोगी का भी जो रियलाइजेशन अलग अलग लेवल हो सकता है, राइट. पहला तो कर्मयोगी का रियलाइजेशन है कि अल्टीमेटली सब कुछ एब्सोल्यूट, जो एब्सोल्यूट है वो क्या है? ब्रह्म ज्योति है. अल्टीमेटली सब कुछ ब्रह्म ज्योति का पार्ट है, राइट. और अल्टीमेटली ब्रह्म ज्योति में मर्ज करना ही है, राइट. एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर्मयोगी का ये हो सकता है, राइट. दूसरा लेवल ऑफ कर्मयोगी का ये हो सकता है कि अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, परमात्मा इज द हाईएस्ट. देखिए, जो तीनों रियलाइजेशन है ना, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा एंड भगवान, ये रियलाइजेशन क्या है, कर्मयोगी के लिए भी इस लेवल का रियलाइजेशन हो सकता है. तो अभी उसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि सब कुछ मोक्ष मोक्ष ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, राइट. मोक्ष प्राप्त करना है, राइट. ब्रह्म ज्योति में जाना है, ब्रह्म में समाहित होना है. तो वो कर्म कर रहा है, लेकिन उसका क्या डिटैच कॉन्शियसनेस है. इट्स नॉट अबाउट ऑफरिंग टू कृष्ण, वो सुप्रीम को ऑफर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो सोचा कि ब्रह्म ज्योति के लिए मेरे को ये कार्य करना है. वो डिटैच है कि भाई ये टेम्पररी है, ये नश्वर है, इसमें एंजॉयमेंट नहीं है ना. अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है. वो इस कॉन्शियसनेस के साथ में करता है, लेकिन क्योंकि वो ये जो ड्यूटीज है वो शास्त्रों की ड्यूटी को फॉलो कर रहा है, जो भगवान के द्वारा दी गई है,
So in that way his activities become an offering to God. समझे आपको? तो ब्राह्मणों की जो ड्यूटीज है शास्त्रों में दे रखी है, and he is ready to accept those duties as given in the shastras. So because he's doing those duties, and because he's doing those duties, and see, he could have done independent actions also, na, but instead of doing independent actions, he's doing those duties as per the shastras. So because he's doing as per the shastras, it becomes an offering to the supreme ultimately. In that way, and that way he elevates. That leads to the advancement. No, he may not be so conscious that okay, I'm doing it for the supreme and that way, but because he's following the shastras, he's following the shastras, and uh, and the shastras are mentioning about those duties, so then he gets advancement in that particular regard. So Prabhuji, doing that duty itself is an offering to the Lord there. Why? Because they are being mentioned by the shastras, first thing, and second thing is also that he is able to have some detachment in his consciousness. He understands that okay, dharma arth kam is not everything. There is a moksha. This material body is temporary. This material body is temporary. This all worldly things will not give me full enjoyment. He has some knowledge about these things. He has some And knowledge about this. there also like he's doing that duty as an obligation, and he's also attached to his identity that he is Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Yes. That's why the karma yogi, no? That's why the karma yogi. That, Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Bhakti yoga I defined, right? This is very important to understand. Bhakti yoga means this shloka you remember. Sarvopadhi vinirmuktam tat paratmena nirmalam rishikena rishikesha sevanam, right? जब इस कॉन्शियसनेस के साथ हम सेंसेस को एंगेज करते हैं, देन इट बिकम्स भक्ति. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसलिए देखो, भक्ति इज अ वेरी वाइड पाथ. It is a very wide path, right? For example, like Prabhupada disciple, no, Prabhupada told that you make this temple. Now, is making a temple, is it a bhakti? Yes, it can be a bhakti, because a person is understanding that I'm a servant of my spiritual master, and my spiritual master has told me to make this temple for Krishna. So even his counting of the cement bags, and this will be also bhakti. This will be also bhakti. For a grahastha person, if his consciousness, he's trying to be under a spiritual master, and he's trying to take care of the family as a duty given to him by Krishna, then he's going to the job, doing a job, software job. That is also part of the bhakti, because ultimately that is helping him to fulfill the order of the spiritual master. Ultimately helping him in his core activities of the bhakti. Bhakti is a wide path, right? But main thing is you have to see that if something is done, the senses are engaged for service of Krishna, then it becomes a bhakti. That's the bhakti can be done by anyone and everyone. There's no restriction for the bhakti. Anyone and everyone can do the bhakti. Counting of the cement bag is also can also become a bhakti. Okay, doing a camp is also a bhakti. How it is bhakti? Because the consciousness is what? What is the consciousness? Consciousness is I'm a servant of Krishna, and I'm trying to serve Krishna as being given ordered to me by the spiritual master. I'm trying to engage my senses. Right? That's how it is there. तो प्रभु जी कर्मयोग में गुरु जो स्पिरिचुअल मास्टर वो उनका रोल नहीं होता क्या? मतलब कर्म नहीं, हर एक योगा में स्पेशल मास्टर चाहिए आपको. कर्म योगी को कर्म योगी स्पेशल मास्टर चाहिए, ज्ञान योगी को ज्ञान योगी स्पेशल मास्टर चाहिए, क्योंकि बिना स्पेशल मास्टर के तो आपको कुछ रियलाइजेशन नहीं आएंगे. लेकिन जो आपका स्पेशल मास्टर था उसका रियलाइजेशन अलग लेवल पर रहेगा ना. जो ज्ञान योगी होगा उसका स्पेशल मास्टर का रियलाइजेशन क्या होगा? ब्रह्म ज्योति तक रियलाइजेशन रहेगा. हाँ, ऐसे करके भक्ति योगा में भी आपको स्पेशल मास्टर चाहिए. तो स्पेशल मास्टर तो सब में रिक्वायर्ड है. तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. So Tattva मतलब कि he knows about the supreme. Either he may be knowing as a Brahma Jyoti or Paramatma or the Bhagwan, whatever level. तो जिस भी लेवल पे वो जानता है उस लेवल तक वो आपको एलिवेट कर पाएगा जो स्पिरिचुअल मास्टर होगा. तो अगर आप ज्ञानी गुरु के पास में जाओगे, at max he may be able to help you to understand that how you may he may be able to help you with the realization that you are not the body, you are the soul, and how the ultimate destination is moksha, like getting mukti, getting out of the material world, right? That realization will come only but when you will follow a yogi, will follow a guru who is having that realization. बिना रियलाइज गुरु के आपको नहीं मिलेगा. आपको चाहे ना आपको कर्म योगा का परफेक्शन मिलेगा, ना ज्ञान योगा का मिलेगा, ना ध्यान योगा का मिलेगा. जो परफेक्ट है, जो कर्म योगा में परफेक्शन पा लिया है या ज्ञान योगा में परफेक्शन पा लिया है, उसी के अंडर में काम करने पे ही आपको परफेक्शन मिलेगा. दैट्स द पॉइंट. ओके, ठीक है. और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी. हम्म प्रभु जी जो 5.29 था इसमें 3 पॉइंट है. तो इसमें सर्वलोकम महेश्वरम और वो पहला वाला पॉइंट प्रभु जी प्रोपराइटर वाला और इंजॉयर वाला,
ये तो ठीक है प्रभु जी, लेकिन सुहृदम सर्वभूतानाम जो रहता है, इसको अगर नहीं समझते हैं तो हमारे जीवन में कैसे अशांति आएंगी? और फिर इसमें प्रीचिंग का कैसे देखते हैं प्रभु जी हम? अगर कृष्णा ही सुहृदम सर्वभूतानाम है, तो देन why we have to preach and why we have to endeavor so hard to connect people with Krishna and like that? एक मिनट एक एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या बोला कि पहला जो दो पार्ट है, कृष्णा इज द एंजॉयर, कृष्णा इज द प्रोप्राइटर। हाँ हाँ, अगर वो नहीं समझेंगे प्रभु जी हम, तो सर्टेनली दैट विल लीड टू मतलब पीसफुल सिचुएशन नहीं रहेगा हमारे जीवन में। ठीक है लेकिन ठीक है। सुहृदम सर्वभूतानाम अगर हम दूसरों का मदद करना चाहते हैं और हम्म दूसरों को मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम कहाँ आती है प्रभु जी? अगर भगवान को अगर सुहृदम सर्वभूतानाम नहीं मानते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्यों आती है? अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि अगर हम लोग, इफ वी डोंट एक्सेप्ट दैट कृष्णा इज आवर वेल विशर, देन हाउ इट विल लीड टू द, हाउ इट विल लीड टू एंजाइटी, कैसे हमें एंजाइटी में लेकर आएगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ मतलब, और दूसरों के भी वेल विशर हैं कृष्णा, सुहृदम सर्वभूतानाम ना प्रभु जी। अच्छा, हमारे और दूसरों के वेल विशर कृष्णा है, अगर इसको हम नहीं समझते हैं तो कैसे हम लोग को एंजाइटी आएगा, पीस नहीं आएगा, ऐसा पूछना चाहते हैं आप? यस प्रभु जी। सिंपल है, देखो जैसे भी आपका तबियत खराब चल रहा है, मान लो किसी का तबियत, आपका नहीं जो बोलोगे मुझे तबियत खराब करवा दिया आपने मेरा, किसी का सब तबियत खराब चल रहा है, कुछ बड़ा या कुछ बहुत फैमिली का बहुत क्राइसिस चल रहा है लेटेस्ट से, राइट ना? अभी देखिए क्या है, अगर आपको ये इस पे फेथ नहीं है कि कृष्णा इज माई वेल विशर, तो क्या होगा फिर, आप क्या सोचोगे? तो फिर आप एंजाइटी रिडन हो गए ना, अरे क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, राइट? एग्जाम्पल में प्रभुपाद, Prabhupada, Prabhupada was trying to work very hard for the business to settle the family, but then slowly he was saying that how everything was collapsing. The factory got closed, and the family relationships were getting broken up. But see, because he was having faith that Krishna is my well-wisher, then he was able to be peaceful, and he was able to see that he was able to see the hands of Krishna, that how it was the desire of my spiritual master that I should do this, and I'm not able to do this because of all these reasons, and now Krishna is organizing my life in a way that I can do those things right now. Because he has that faith that Krishna is my well-wisher, then that's why he was able to do like that. Same way, if we understand that Krishna is the well-wisher, then only actually this is very important. If we don't understand Krishna is my well-wisher, then we will get bewildered in so many different ways. Krishna is our well-wisher, and Krishna is in the control of all the creation. Which means what? Whatever Krishna will send in my life, whatever will happen, that will be for my good only. Now that good will be with respect to the ultimate goal of life. That may not be good with respect to my material ambitions, material desires, and my material bondage in this world. But that will be good with respect to my ultimate liberation from this material world. So if Krishna is saying that, I am becoming very much materially attached, materially distracted, then Krishna may give many big obstacles, big challenges. But that is also perfect arrangement of Krishna. Why? Because that will help you to get shaken up, and you can again give up your hopes for material enjoyment in this world. So with respect to the ultimate goal of life, the arrangements of Krishna will be perfect. But with respect to our material desires, with respect to our conceptions, it may not look to be very perfect. Right? Krishna says, "Na, everything aham sarvasya prabhavo matha sarvam pravartate." Everything is emanating from Krishna only. This first thing, and then in the Ishopanishad, Krishna said that how? What is that shloka? Om Purnamadaha Purnamidam Purnam Purnad Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Right, everything coming from Krishna is complete and perfect. Krishna is complete and perfect, so everything coming from Krishna is also complete and perfect. तो सी, अगर आप दोनों को कंपेयर करें, भगवत गीता कृष्ण इज सेइंग दैट अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते, all things are coming from me, all the material situations, all the material world, spiritual world, everything is governed by Krishna. And you see, Ishopanishad is telling that everything is complete and perfect, which means what? Everything coming in our life is also complete and perfect. So if we have this faith, then what will happen? Then we can be peaceful. Na? Otherwise, we will not be peaceful. We will be not. We will become agitated. Arey, why this is happening in my life? So it is good for us. It is also good for the other people. What is happening to others is also good. Like for example, like we find that somebody is suffering very terribly. Now you may think that how it is good for him. Krishna is how is he's a well-wisher of him. No, see, he is doing some pap karma. Krishna has made a system of the laws of karma, and he goes through that suffering so that ultimately he can be awakened, enlightened that I should not do the papa. I should try to work. I should try to follow the shastras in my life. So in that way, it is also perfect. Now Krishna is acting as a well-wisher for him also because he has to be rid. He has to be getting rid of that material desires. Is it okay, Prabhu? यस प्रभु जी, इसमें ये दूसरा पॉइंट यही आता है कि इफ जैसे दूसरे की लाइफ में कुछ हो रहा है, ही इज हाँ सफरिंग, हाँ देन
देन फिर हेल्प करने का पॉइंट ही नहीं आता ना प्रभु जी, क्योंकि सूर्यदम सर्वभूतानाम तो कृष्णा ही है। तो वो अगर कुछ कर रहे हैं तो फिर हमको हेल्प करने का या फिर हमको उनको प्रीचिंग करने का या जो भी है भगवान के बारे में बताने का, क्योंकि भगवान तो फिर अरेंज कर ही देंगे ना उनके जीवन में अल्टीमेटली। तो फिर हमको इंटरफेयर करने का या फिर हमको वो चीज करने का फिर कहाँ पे आता नहीं है? देखिए, हम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ही हमको बोल रहे हैं ना, भगवान ही हमको बोल रहे हैं। व्हाट इज दैट, चैतन्य महाप्रभु हमको बोल के गए ना कि प्रीचिंग करो। भगवान भी बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों को, जो भी इस मैसेज को प्रोपोगेट करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो हम ऐसे ड्यूटी करते हैं। यस, हम इस कॉन्सेप्शन में नहीं करते कि हमारे करने से लोग भक्त बन जाएंगे, हमारे करने से उनका सफरिंग खत्म हो जाएगा। अगर हम ये सोच के कर रहे हैं तो हम इग्नोरेंस में। नहीं, हम क्यों कर रहे हैं? एज ए ड्यूटी टू कृष्ण, बिकॉज कृष्णा ने ये बोला है करना है। और इसी के थ्रू कृष्ण अपना मर्सी भी देते हैं लोगों को। भक्त्या माम अभिजानाति, सॉरी, भक्त्या संजायते भक्ति, राइट। भक्ति जो है वो भक्तों के माध्यम से ही भगवान देते हैं। भगवान का एक सिस्टम है कि भगवान भक्तों के थ्रू भक्ति देते हैं लोगों को। ये कृष्णा का सिस्टम है, हम बस कृष्णा के एक सिस्टम में कॉपरेट करें, फॉलो करें। हमारे करने से भक्ति नहीं मिल रही है लोगों को। हम नहीं भी रहेंगे तो देखो, जिनको मिलना होता है वो कृष्ण, जिनका डिजायर होता है उनको, उनके लिए कृष्णा कोई दूसरे से उनके लिए ऑर्केस्ट्रेट करने वाले हैं। यस, तो ये पॉइंट सही है, इस सेंस में सही है कि एक्चुअली हम डूअर्स नहीं है, हम बस इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं लॉर्ड के। बट या ये तरीका भगवान ने सिस्टम बना रखा है कि इस तरीके से भगवान अपने ड्यूटीज को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं दूसरे लोगों को अपने अपनी मर्जी देने के लिए। अवर रोल इज ओनली ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। बट हम ये सोच रहे हैं कि अरे है ना, हमारा कोई रोल ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है, नहीं, हमारा रोल है। वी कैन बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कृष्णा, एंड कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज्ड इफ वी बिकम सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दैट्स व्हाट कृष्ण टेलिंग द गीता है ना, य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश अभिधाषति। भगवान बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस गुह्य ज्ञान को दूसरों को देता है, he becomes very very dear to me and he is assured of going back home, back to Godhead. So Krishna has given this as a duty that we can become his instruments, and in that way we can also get benefited, we can also get, that thing. But if we think that okay, we are the ones who are making a change in their life, not like that. We are just an instrument. Yes, that's true, but it is true in the sense that we are only an instrument of Krishna. We are not the ultimate one. जैसे अभी बिजली आ रही है ना यहाँ पे, बिजली, ठीक है, अभी हमारे स्विच दबाने से बिजली जल्दी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में हमारे जब में अल्टीमेटली सप्लाई से बिजली आ रही है, इसलिए हमारे चलाने से वो दिख रहा है। अगर अल्टीमेटली सप्लाई से नहीं आ रहा होगा तो हम भले कितना भी स्विच को घुमाए फिराएं, बिजली नहीं दिखाई देगी यहाँ पे। वैसा है हमारा हमारा पार्ट, क्या है, इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। दैट्स द पॉइंट। यस प्रभु जी, अंडरस्टूड। हमें हमारा ड्यूटी है वो, प्रीचिंग करना हमारा ड्यूटी है ना। वो हमारा ड्यूटी है, कृष्णा ने हमको ड्यूटी दिया, कृष्णा ने सिस्टम बनाया अपना। कृष्णा अपना, see, जो devotees हैं, they don't want anything in this world, but Krishna want to glorify his devotees. So that's why Krishna has made his devotees as the wholesalers or the retailers of his bhakti. There's no other way. That's how. That is the way how Krishna glorifies his devotees. Krishna makes a way for glorifying his devotees. That's the point. Okay, और कुछ? I और think प्रभु बहुत जी टाइम ये हो गया। प्रिस्क्राइब ड्यूटी का जैसे डिवोटीज के केस में हाँ, प्रभु जी जो गुरु बोलते हैं वही प्रिस्क्राइब ड्यूटी हो जाता है ना yes, प्रभु जी? yes, मतलब perfect, perfect. चारों वर्ण से बाहर निकल जाते हैं डिवोटीज एक तरीके से हाँ, देखा जाए। करेक्ट। यस, करेक्ट। गुरु ऑफकोर्स बोल रहे चारों हैं वो वर्ण में ही भक्ति कहीं बन ना कहीं जाता है। ऐड करते हैं, लेकिन हाँ, जो भक्ति के लिए जो हमारे लिए अनुकूल होता है वो हमें हमें गुरु बताते हैं। एक्ट तो देखो, इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको ऑपरेट करने के लिए चारों वर्णों में आपको काम करना पड़ेगा, या तो चारों वर्ण या फिर उसके आउटसाइड दिस फोर फोर। ऑपरेट तो हमको इन्हीं में करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो हमारे भक्ति के लिए कंड्यूसिव है वो हमें, उसका हमें गाइडेंस मिलेगा और हम भी थोड़ा समझ पाएंगे हमारे नेचर के हिसाब से। ऐसा है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके ब्रोज, आई थिंक शुड बी एंड देन। I will send you this notes of 5th chapter. श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त विंद की जय।